Hello, this is a new series about Laxmikant 7th edition explained, in which I'm going to go over all the chapters one by one through these notes that I made to cover up the entire book. So, we're going to start with the very first chapter, that is the historical background. For the disclaimer of this chapter, I would say that major portion of the information regarding this entire period is a part of the modern history syllabus. So in Laxmikant, all we discuss about during this East India Company and Crown Rule period is the legislations both of these authorities brought in during their rule. तो इस चैप्टर में हम सिर्फ वो ही लेजिस्लेशंस पढ़ेंगे जो लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है, ना कि इनकी पूरी हिस्ट्री, because that is part of our modern history syllabus. So without further ado, let's begin. Chapter 1, Historical Background. The story begins with coming in of East India Company or EIC in 1600 with an exclusive trading right charter by Queen Elizabeth I. एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट का मतलब है कि ब्रिटेन से इकलौती कंपनी जो इंडिया ट्रेड कर सकती थी, दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी. सो दे हैड अ मोनोपोली इन इंडियन ट्रेड in respect to their Britain counterparts, right? And that is how the entry of East India Company becomes in our country. Next up, we go fast forward to 1764 when there was Battle of Buxar between East India Company, जिसको लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो, versus three rulers of India who were Shah Alam, the Mughal emperor, Nawab of Bengal, Mir Qasim, and Nawab of Awadh, Sijaud-Dौla. इन तीनों को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और उन्हें बदले में मिलते हैं दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. अब दीवानी राइट्स का क्या मतलब है? इट मीन्स रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस राइट्स. इनको उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया वो हम लेजिस्लेशंस में देखेंगे. एंड दिस इज़ हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर कंपनी रूल जिसका पीरियड है 1773 से 1858 तक. द डिस्कशन ऑफ टुडे विल फोकस ऑन कि कंपनी रूल के अंडर उन्होंने कौन कौन से लेजिस्लेशंस यानी एक्ट्स पास किए जिससे उन्होंने कंट्री में एडमिनिस्टर किया. सो द फर्स्ट अप वी हैव इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द EIC एंड लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब एक ही अथॉरिटी, एक ही इंस्टीट्यूशन में इतने पावर्स और इतने राइट्स दे दिए जाएं कि वही अथॉरिटी पूरी टेरिटरी पर रूल करे. फॉर एग्जाम्पल, in India we have a union government, though we follow the system of federalism, we have a central government. अगर इमरजेंसी आ जाती है तो सारा रोल जो है वो एग्जीक्यूटिव में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हेन वी कॉल इट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट होना पूरी टेरिटरी का. तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो एक्ट था ये इसकी शुरुआत थी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसी अथॉरिटी, कैसा इंस्टीट्यूशन इंडिया में बन जाए कि वहीं से सारा देश एडमिनिस्टर हो. When we talk about the basic features of regulating act, we have 4 in number. First is that company servants will not take presents, bribe or indulge in private trade. This means not. इसका मतलब है कि जो कंपनी के सर्वेंट्स, इट्स नॉट द लिटरल सर्वेंट्स बट पीपल हु वर वर्किंग अंडर द कंपनी, दे आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग प्राइवेटली. अब वो जो भी काम करेंगे दे विल डू ऑन द कंपनीज बिहाफ. Secondly, the court of directors, who were the governing body of EIC, they're going to report to the British government on the civil, revenue and military matters. यानी कि जैसे हर कंपनी के board of directors होते हैं who take all the major decisions about the company, that is how court of directors were there in case of East India Company. And they were given a new responsibility that whatever decisions they're taking on civil, military and revenue fronts, they're going to report that to the British government. Next up, इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा was established in 1774 and Sir Eliza MP, who became the first Chief Justice, along with 3 judges, were appointed at the Supreme Court. जो बड़ा अगला बदलाव उन्होंने किया was in the nomenclature. गवर्नर ऑफ बंगाल को उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, जो कि हमारे पहले बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. Along with that, गवर्नर जनरल को उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी ऑफ 4 मेंबर्स और साथ ही उसे ये पावर दी कि नाउ द गवर्नर जनरल विल बी मोर पावरफुल एंड सुपीरियर देन द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बंगाल.
I'll just give you a background regarding this. In our country, there were three presidencies, major presidencies, which was Bengal, Bombay and Madras. अब जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, he was said that he was superior to the governors of Bombay and Madras. So that is what we're talking about here. ये सब हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से. नेक्स्ट अप वी हैव द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं. इस एक्ट का मेजर पर्पस था कि जो कमियां, जो एरर्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रह गए हैं, उनको पूरा कर दिया जाए. इसके मेजर फीचर्स अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट वाज रिगार्डिंग गवर्नर जनरल, व्हेन ही वाज गिवन द पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल एंड हियर अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स डायरेक्टली रादर देन सुप्रीम कोर्ट. तो जब हमने डिस्कस किया कि उन्हें दीवानी राइट्स मिले थे और उसके अंदर उन्हें सिविल जस्टिस राइट्स और रेवेन्यू राइट्स मिले. दिस इज़ व्हाट द सिविल जस्टिस राइट इज़, टू बी एबल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर कोर्ट्स एंड टू बी एबल टू हियर अपील्स rather than people going to the Supreme Court. That power was given to the Governor General of Bengal. Next feature of this amending act of 1781 is Supreme Court के regarding. First उन्होंने बताया कि what is the jurisdiction of Supreme Court. It's entire Calcutta. और जो Supreme Court trial लेगी that will include consideration towards the Hindu and Mohammedan law, यानी कि religious laws को भी consider किया जाएगा. एंड सेकेंडली जूरिस्डिक्शन बताने के साथ ये भी बता दिया कि एग्जेम्पशंस कौन से हैं, एक्सेप्शन क्या होंगे, विच विज गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द सर्वेंट्स ऑफ EIC, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, या ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स हो, वो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्डिक्शन में नहीं होंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. Next up we have is a very important act, which is Pitt's India Act 1784. It was introduced in the British Parliament by the Prime Minister William Pitt, and that is how it got its name. Now this was the first time the company's territories were called British possessions. उनको नाम दिया गया कि जब भी ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, it was told in the British Parliament that the territories occupied by the East India Company are British possessions. The most important feature of this act was the establishment of double government. This was the first time that in India a double government was established. How? We studied about the court of directors, जो कि उनकी old governing body थी. अब उसको सिर्फ commercial affairs दे दिए गए. You take care of the commercial affairs. And a new body of control was created, which were given the responsibility of political affairs, civil affairs and military affairs. So that is how they established this double government within the administration of the company. And this was the Pitt's India Act 1784. Next up we have a little less important act, which is Act of 1786. जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने वाले थे, उनके कारण आई. ही पुट फॉरवर्ड टू डिमांड्स before taking up the position. These demands were that he was to be given overriding powers over his executive council, and he was to become the commander-in-chief of all forces. They agreed, and to implement both of these demands, Act of 1786 was put into force. So that was all we have in Act of 1786. Next we have the most important acts for the company rule, which are 4 charter acts, which were implemented at a gap of 20 years each. So the first one we have is Charter Act 1793. First जो इसमें point है, feature है, that is related to the revenue rights. The Board of Control जो Pitt's India Act 1784 से बनाया गया, they will be paid out of the Indian revenue. उन्हें बोला गया कि whatever salaries you want, take it from there only. We're not going to pay you the salaries. Next up, the overriding powers of the Lord Cornwallis was to be given to all future Governor Generals. Third one, the Governor General was now superior and control the presidencies of Bombay and Madras. तो पहले सिर्फ उन्हें superior बनाया था, now उन्हें control भी दे दिया over these presidencies. And fourth was a default point, to extend the trade monopoly of East India Company for another 20 years. So that is how कि अब East India Company अभी भी 20 साल और अकेली वो कंपनी होगी जो ब्रिटेन से इंडिया में ट्रेड कर रही होगी. This is all we have for Charter Act 1793. Next up we see 20 years later Charter Act 1813.
Now what happened as it abolished the trade monopoly of East India Company except for tea trade and China trade. Now, what does this mean? It abolished the trade monopoly. Now, here it is important to know it abolished the monopoly, not the trade. मोनोपोली खत्म करने का मतलब है अब और भी मर्चेंट्स कंपनीज ब्रिटेन से आकर इंडिया में ट्रेड कर सकती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकती है पर अकेले नहीं, एक्सेप्ट फॉर टू ट्रेड्स। अभी भी जो चाय का ट्रेड था और जो चीन के साथ ट्रेड था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली एस्टैब्लिश्ड थी। नेक्स्ट अप व्हाट वी सी इज कमिंग अप ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया फॉर द सो कॉल्ड इनलाइटनिंग मिशन। हमें सिविलाइजेशन सिखाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ कर दिया गया और वेस्टर्न एजुकेशन की स्प्रेड भी शुरू की गई। Last is again a default point, talking about revenue again, that now the local government will be able to impose taxes on people and punish the people also if they default on the taxes. This is what we see in the Charter Act 1813. Next up we see Charter Act 1833, another 20 years later. Now this is a very important act among the Charter Acts. It was called the final step towards centralization. सेंट्रलाइजेशन का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि एक ही अथॉरिटी में जब सारी पावर आ जाएगी तो फाइनल स्टेप मतलब सारे बीच के स्टेप्स हो चुके हैं. दिस इज़ हाउ यू फाइनलाइजिंग द इंटायर टास्क व्हेन नाउ यू हैव अ वेरी पावरफुल अथॉरिटी जो पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सकती है. एक और फीचर जो इसके लिए इस एक्ट के लिए था वाज दैट प्रीवियसली जो भी लॉज आए उनके पार्ट्स को रेगुलेशन कहते थे. हाउएवर चार्टर एक्ट 1833 के अंडर जो भी फीचर्स हैं उनको हमने एक्ट्स कहा, उन्होंने एज एन एक्ट्स कहा. नाउ विल डिस्कस व्हाट दीज फीचर्स वर. फर्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, बिकॉज हमने कहा दिस वाज द फाइनल एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन. हमें पोजीशंस भी वैसी चाहिए तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, पूरे कंट्री का गवर्नर. And Lord William Bentinck was the person who became the first Governor General of India. And now the Governor of Bombay and Madras, they lost all their legislative powers. So पहले तो उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट से सुपेरियर बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, फिर चार्टर एक्ट से कंट्रोल भी दे दिया और नाउ लास्ट चार्टर एक्ट से उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स पूरी तरह ख़त्म कर दी गई. नेक्स्ट अप व्हाट वी सी इज़ दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव. यानी जब हमने देखा पिछले चार्टर एक्ट में उनका मोनोपोली ख़त्म किया, ना उनका ट्रेड ही अबॉलिश कर दिया. अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कंट्री को कंट्रोल और एडमिनिस्टर करने के लिए थी, ट्रेड करने के लिए नहीं. अब उनका कोई भी कमर्शियल पर्पस नहीं था. नेक्स्ट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बट मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. व्हेन वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू allow Indians into the civil services? So it was under Charter Act of 1833, जिसमें कोशिश की गई कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया जाए फॉर इंडियंस. हाउएवर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनसे ऑपोजिशन के कारण ये एक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया. सो हाउएवर देयर वाज एन अटेम्प्ट इन चार्टर एक्ट 1833 itself. So this is this. Next up is the last of the Charter Act 1853. Now it is not that important because जो 1833 चार्टर एक्ट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है उसी को इन्होंने आगे एक्सपैंड किया. कैसे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑलरेडी थी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाई गई थी. अब एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म की गई विच वाज कॉल्ड द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. It was also called the mini parliament because its formation composition was very similar to the British Parliament and it had 6 members. What's very important about this provision is that it was the first time local representation was given to Indians in the administration. इन 6 में से 4 जो appointees थे, they were appointed by the provincial government of Madras, Bombay, Bengal, 3 हमारी presidencies, and then Agra. So this was the first time local representation was allowed. And here we see पिछले एक्ट का एक एडवांसमेंट, एक डेवलपमेंट, that civil services was open for Indians. Prelims perspective से very important point would be this was based on Macaulay Committee on Indian Civil Services 1854 की recommendation पर. This is how Indians were allowed in the civil services. So this was Charter Act 1853. And then what we see is the very famous First War of Independence, the Sepoy Mutiny in 1857, and that is when the company rule ends.
बिकॉज अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगता है इस म्यूटिनी के बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ नॉट केपेबल इनफ to administer the entire country of India, and that is why there's a transfer of power from the company to the crown. And what we see ahead is a crown rule for the next year, next time till we get independence. So directly हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश किंग क्वीन गवर्न करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह इंडिया से हटा दिया जाता है. So this was the first part of the chapter, the company rule.